CA Rinkesh Shah ji from Ahmedabad. He is an elected managing committee member of Ahmedabad branch of ICI. First of all, I congratulate Rinkesh ji for being elected as a member of Ahmedabad branch of WRC of ICI, and our well wishes for your term ahead. Friends, we all help in the preparing of the financial statement for our clients, but we are committed some of the mistakes in while preparing the financial statements. Today's we have our speakers here, Rinkesh Shah ji, who will describe in detail about all these common mistakes we committed in the financial statement. So we will not uh, do in the future. Before we welcome our today's speaker, CA Rinkesh Shah ji, I request our coordinator of the program, CA Kapil Kumar Joshi ji, for brief introduction of CA Rinkesh Shah ji. Kapil ji. Thank you, Jitendra sir. Good evening, everyone. A warm welcome to all of you at the third virtual CPE meeting of Andheri Oshiwara Study Circle. I am honored to introduce our eminent speaker, Mr. Rinkesh Shah, who will be regaling us on the subject common mistake in financial statement. He is a qualified chartered accountant, company secretary, and qualified as an independent director from Indian Institute of Corporate Affairs. He is qualified peer reviewer from Peer Review Board of ICAI for term 2021 to 2026. He has completed certified course of ICAI on India's along with diploma in international financial reporting from ACCA UK. He's completed certificate course on Concurrent Audit of Bank from ICI. He's completed certificate course on blockchain from ICI. Currently, he is the managing partner in Rinkesh and Company, chartered accountant since 2009. Having wide experience of setting up companies in USA, Hong Kong, Singapore through his own network since 2012. He's visiting New York every year since 2012 for audit and taxation work of real estate companies of Manhattan. During these visits, handled various assignments to convert financial statement from US GAAP to IFRS. He is a regular speaker on various regional TV channels on various topics. Addressed more than 100 seminars at various forms. In India, he has handled various assignments of conversion from Indian GAAP to Ind AS. He is the faculty member of certificate course on Ind AS of ICI, delivering lectures at Pan India on behalf of Ind AS Implementation Committee of ICI. He is also faculty member for IASB ICI, delivering lectures at Pan India on behalf of Internal Auditing Standard Board of ICI. He is a faculty member of FRRB ICI, delivering lectures at Pan India on behalf of Financial Review Reporting Board of ICI. Working as a group member of Financial Review Reporting Group set up by FRRB ICI since 2014. He is contributed in one of the group member in drafting educational material of Ind AS 105 published by the ICI. He is currently elected managing committee member of Ahmedabad branch of WIRC of ICI for the term 2022-2025. It is an honor and privilege for us, sir, to have you with us today. So now I request him to enlighten the members with the words. So please give a thunderous applause for him. Thank you. Thank you. Thank you, Kapil ji. Thanks a lot, Jitendra ji. Yeah. Should I start now? Yes. Yes. Thank you, Jitendra ji. Thank you, Kapil ji. Thank you, Utkarsh ji, for inviting me. And I think today is the second session of mine. In the morning, we were discussing about Schedule 3 requirements in the Ahmedabad branch itself. I was invited as a faculty, and we discussed on that. And at that point time, also I recalled, that we have to discuss a lot about the common mistakes which we are normally making. So I'm sharing my PPT presentation. I'm not taking much of our time and just starting the presentation. So you will, we will discuss one by one. Hope my screen is visible to all of you. Hello. Hope my screen is visible to all of you. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, okay. So
Today we are going to discuss about the common mistakes in the company audit financial statements, which we are going to do that. So now I want to go with the some specific portions which we are making the mistakes. Now this session will be interactive sessions. In the webinar, I have noticed, I have taken many webinars during the pandemic, I can say, right? So few people are like just log in and just putting the camera switch off and just doing their work to get the CPE credit. But as a managing committee member of the institute, I always insist to have this session should be fruitful, and I'm speaker for a long period of time, so I know the fact. So this session will be interactive session, so I request the coordinator to keep the chat box open for all of us. So any kind of question is there, any kind of requirement is there, we can discuss over there. If somebody wants to unmute and ask the question, then also please allow them to ask the question in between. So that will be great for us. So now first point is that FAQs on unique document identification number. All of us are know that recently, actually, if I was discussing this slide a year before, then people might be having some surprises. But recently, you might have faced many issues while updating your UDIN with the income tax portal. Yes or no? Absolutely right, right? You might have, because you might have generated UDIN for 3CA and you have to upload for 3CB. You uploaded 3CB file and UDIN was for 3CA or something like that. So that kind of error was there, and now it was resolved, and that time has extended to 31st May. So my first and foremost thing is that major chartered accountants are making some mistakes in preparing the UDIN, or they are not having the awareness that when to create UDIN, when not to create UDIN. For example, bank guys are approaching us and asking, oh, मुझे ITR चाहिए, साइन करके दे दो ना, साइन करके ले जाते, फिर बोलते हैं नहीं नहीं मुझे यूडिन वाले चाहिए, आपका वो यूडिन नंबर लिख के दे दो ना. Boss, we cannot sign ITR statement, we cannot generate UDIN for ITR. Please make note of that. Reason is that because we cannot certify which is certified by the government itself. Banks are asking irrelevant requirement, right? So my point is that we must have in our digital library, I can say, the book called FAQ on unique document identification number. That must be there, which gives the FAQs and the questions which generally we have. इसका UDIN generate करना चाहिए, नहीं generate करना चाहिए. मैं question पूछता हूँ आपको, simple question, give me the answer. Financial statements आप audit करते हो, clear? You are auditing the financial statements. You are issuing the audit report, and you are writing UDIN. So my question is that, is it compulsory to write UDIN in audit report? Answer is yes. Is it compulsory to write UDIN on the financial statement? What will be the answer? Can anyone give me the answer in the chat box? The UDIN which was generated by you in the audit report, is it compulsory to write on the financial statement? Aditya sir is saying no. Any other answer? I am waiting for that. There are 46 participants. If I am excluding myself, so remaining 45. Yeah, Shruti K ma'am is saying no. Absolutely right. It is not required and never to be written. Yes, because this UDIN is for audit report, not for the financial statement. Okay, friends. So that was the one point. So UDIN disclosure must be there in proper format. Now signature. आप सबको ऐसा लगता होगा ये छोटी छोटी बात है, डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन यस वी आर गोइंग टू डिस्कस. आपने एक्सपेक्टेशन रखा होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या मिस्टेक्स होती है, इंडेक्स में क्या मिस्टेक्स होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. यस वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस पॉइंट, बट दीज आर द सम ऑफ द क्रूशियल पॉइंट, right? So where it is general, because I am the one of the FRRB financial review reporting. I'm working with the financial review reporting board since last I think 8 to 9 years, since 2014, right? So I know people are making some sort of mistakes either in the private limited company or the listed company. So what kind of mistakes are there? So one of them is a signature. Now can anyone give me the highlight? What do you mean by term signature? सर क्या उसमें हाईलाइट देने का, पेन से हम जो साइन करते हैं उसको सिग्नेचर बोलते हैं? आंसर इज नो. फॉर दिस फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट, FRN नंबर, आपकी सिग्नेचर, आपका नाम,
as a partner और आपका membership number. The whole bunch is known as signature. Hope it is clear to you, right? And you have to write place and address of the signature. Clear? Now, my question to all of you, please give me the answer. Is it possible that my client is in Andheri, I am doing practice in Ahmedabad? Clear? So I am signing my audit report at Ahmedabad. My client is signing financial statement at Andheri, and I am signing the financial statement at Ahmedabad. So on the financial statement also we are writing place and date. So my question to all of you is that what will be the date and place on the financial statement, whether it should be Ahmedabad or it should be Andheri? I'm asking about the financial statement right now. I'm not asking about the audit report. Can anyone give me the answer? Can anyone give me the answer for the same? Mumbai, Aditya sir is saying Mumbai. Aditya sir is saying Mumbai. Anyone, any other answer? Financial statement Mumbai. Aditya sir, reason is that that client is at Mumbai, right? No. Please pay attention. On the financial statement, we can have two places also, where the signature of the board of directors are there. That at that place we can write place and date, Andheri, or also for example Mumbai, and the specific date. And for the Ahmedabad, yes, for the Ahmedabad, so my signature, where the financial statements are there, where my signatures are there, at that time place and sign, sorry, place and date should be based on the Ahmedabad and the date. Hope it is clear to all of you. And audit report. Now my question is that I am practicing at Ahmedabad. I am twisting my question. I am practicing at Ahmedabad. My client is at Andheri, Mumbai. Right? Now, I am on holidays with my family at Shimla. And at that time in the morning, I am sending the audit report, signed audit report. So what will be the place of the audit report? Ahmedabad, Mumbai, or Shimla? Any guess? We are getting my question. Audit report में place of signature कौन सा होना चाहिए? मैंने शिमला में बैठ के साइन किया है, मेरी ऑफिस अहमदाबाद में है और क्लाइंट अंधेरी का है, तो कौन सा होना चाहिए? एनी आंसर? Anyone can give the answer. Audit report must be signed at Mumbai or Ahmedabad or Shimla. Anyone? Rajiv sir is saying Shimla. How many of you are agreeing with this? Can it be of Ahmedabad or can it be of Mumbai? Or it has to be of Shimla? Rajiv sir का आंसर बिल्कुल सही है. It has to be at Shimla from the place where I am signing. So hope it is clear to you कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां पे बैठा है, जहां पे फाइनेंशियल साइन कर रहा है, जहां पे ऑडिट रिपोर्ट साइन है, वो ही प्लेस उसका होना चाहिए. It is not like the place of the client or it is not like the place of the auditor. Hope it is clear to all of you, right? Now next. Yes. Hope all of us are aware that instead, yes, CA date be different. Answer is yes. Purohit sir का question है, can CA date be different? Answer is yes, but board of directors के बाद की date होनी चाहिए. What date to be written if the two separate dates are there? Arun sir का question भी बरोबर है. मैं specifically बोल दिया, पहले board of directors की date होगी, बाद में ही, sorry, board of directors की financial statement की date होगी, बाद में ही audit report की date होगी, लेकिन डायरेक्टर रिपोर्ट की डेट उसके बाद की होगी. लेट मी रिपीट माई सेल्फ. पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फिर ऑडिट रिपोर्ट की, एंड एज रिपोर्ट ऑफ इवन डेट और अनइवन डेट, एज पर द रिपोर्ट ऑफ इवन डेट और अनइवन डेट. एब्सोल्युटली जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं एज पर द रिपोर्ट ऑफ इवन डेट, उसकी जगह आप लिख सकते हो एज पर द रिपोर्ट ऑफ दिस डेट. होप इट इज क्लियर टू यू. Clear?
अभी जो हम क्या कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट सब एक ही डेट का कर रहे हैं आदित्य सर. That's why we are writing the words as per report of event date. तो उसकी जगह क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लिखेंगे as for the report dated plan blah if the date is different. Clear, right? But yes, board of directors पहले साइन करेंगे, बाद में ऑडिटर अप्रूव करेगा. That has to be clear. हाँ, दोनों की डेट साथ में हो सकती है, दोनों की डेट साथ में हो सकती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है. बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि ऑडिट रिपोर्टर्स की डेट पहले हो और बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट. होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस. नाउ checklist of accounting standard and Ind AS compliance. Our institute has given the checklist for accounting standard as well as Ind AS. We have to maintain or we have to do, you know, the proper tick mark, and we have to have that spreadsheet, the checklist in the spreadsheet, and while doing the audit, where the accounting standard is applicable or where I can say Ind AS is applicable, we have to mark accordingly. Clear? And we have to prepare this checklist, because I'm also peer reviewer. I see number of the chartered accountants are not following the auditing standards. We are not checking whether the accounting standard has been followed or not. Sir, we know very well, we are the chartered accountant, we think from all the viewpoint, but again sometimes we are missing the stuff. So we keep everything in our mind. It should not be there, it should be documented. So we must have the checklist, we must have this checklist disclosure in our library, and also with the working paper. Now MCA few discrepancies as far as Ind AS is concerned. So now accounting standard 1. So first questions to all of you. How many accounting standards are there? Please write your answer in the chat box. How many accounting standards are there? If the Devan sir ka question hai, Devan Bafna, if the HO company is Bangalore but financial signed as Mumbai, is it okay? Answer is yes. You can, no issue. एचओ कहीं पे भी हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर सकते हो. हाँ, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वहीं पे साइन करना पड़ेगा एचओ के ऊपर. ऑडिटर हैज टू साइन. ओके. 41, Rajesh sir is saying 41 accounting standard. Aditya sir is saying 29. Any other answer? How many accounting standards are there? One repeat. Yes. Okay. 31, 32, 29. Any other answer? Jitendra sir is saying 32. Okay. ओमिट हो चुके ना सर उसमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 ओमिट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? Yes or no? So few accounting standards omitted. Out of 32, 2 are omitted, right? So effective, yes, effective is 27, absolutely right. बाकी के 3 voluntary है, तो effective is 27. कपिल सर का आंसर बिल्कुल सही है. So now we are going one by one. Few accounting standards where general discrepancies were, so yes, general observed discrepancies are there. All significant accounting policy adopted in the preparation of accounts need to be disclosed for proper understanding of the financial statement by the user. ध्यान दो सर, जितनी भी लाइन आइटम आपकी है, बैलेंस शीट एंड पीएनएल की जितनी भी लाइन आइटम है, हर एक आइटम का डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में होना चाहिए. उसकी पॉलिसी आपने क्या अडॉप्ट की है, दैट हैज टू बी देयर. ऐसा नहीं कि नोट्स टू अकाउंट्स में प्री ड्राफ्टेड नोट्स टू अकाउंट्स है जिसमें कंट्रोल एफ करके रिप्लेस करके ईयर रिप्लेस करके डाल दिया. दैट कैन नॉट बी द केस. Hello. Again, कोई एक hello. why it is not. Hello. Rinkesh sir.
Yes, are you getting me now? Yes, yes. Something is wrong. Actually, I changed my internet connection also. Then also it is like, I don't know. It should not be the case, but I don't know. Okay. Now, screen is visible. So clear. All the accounting policies should be at one place, right? Now, change in accounting policy not appropriately disclosed with the quantitative impact. Majorly, generally, people are writing the accounting policy. They are changing, accounting policy. For example, WTV to SLM, but they are forgetting, to give the quantitative impact of that. Timing of recognition of revenue from sales, interest, royalty, dividend in case of mercantile basis not disclosed. कई बार ऐसा होता है कि भी आपको इंटरेस्ट मिला है तो कैश बेसिस पे ले लेते हो, अक्रूवल बेसिस पे नहीं लेते हो. बाकी का अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे, इंटरेस्ट जो है वो अक्रूवल बेसिस पे नहीं है, वो आप कैश बेसिस पे लेते हो. सो दैट हैज टू बी रिटन इन नोट्स टू अकाउंट्स. रॉयल्टी कैसे ली, डिविडेंड कैसे लिया, क्लियर. राइट टू रिसीव हुआ है तब लिया हुआ है, फाइनल डिविडेंड मार्च में डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन आपको राइट आपका था, रिकॉर्ड डेट कंफर्म थी, लेकिन आपको पेमेंट डेट थी वो अप्रैल में थी, तो क्या आपने अप्रैल में वो डिविडेंड लिया हुआ है? सो दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज्ड प्रॉपर्ली. यस. नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. Generally observed discrepancies in the AS2. First point, raw material, work in progress, spares, stores, packing material, valued at cost, finished goods, valued at NRV. So finished goods, raw material, WIP is, valued at lower or cost or market value, whichever is lower. So ये जो statement है, that has to be written in notes to accounts. ऐसा नहीं है कि भी आपने लिख दिया. क्लियर. आपने कर लिया है उसको, वो मेथड फॉलो कर लिए, कॉस्ट एंड एनआरवी व्हिच इज लेस, दैट इज ऑल टुगेदर सेपरेट इशू, बट दैट हैज टू बी रिटन इन नोट्स टू अकाउंट एज अ पॉलिसी. इन्वेंटरी वैल्यूड एट मूविंग एवरेज मेथड, whereas the standard prescribe that basis of measurement of inventories can be FIFO or the weighted average. So sometimes people are taking moving average, but it is not allowed as per the standards. So that has to be written properly and has to be as per the standards. Now, accounting policy for building construction of the company, constructed equipment related depreciation are valued at cost. Again, आपने खुद ने वो बिल्डिंग बनाई है, आपने बिल्डिंग बाय की है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपने खुद ने वो बिल्डिंग बनाई है तो जो WIP थी, WIP से उसको कैपिटलाइज किया, कैपिटलाइज करने के बाद उसका डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, तो वो जो कैपिटल कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन होगा, एंड दैट हैज टू बी रिटन इन नोट्स, राइट. कॉस्ट फॉर्मूला एम्प्लॉयड, राइट. सो कॉस्ट फॉर्मूला एम्प्लॉयड इज नॉट मेंशन, वेदर इट इज अ FIFO, वेटेड एवरेज कॉस्ट, जो अलाउड है वो आपने वहां पे उसमें उसका फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है. समटाइम्स वी आर जस्ट राइटिंग वी हैव फॉलोड द FIFO मेथड, बस उसका जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है दैट आल्सो हैज टू बी रिटन. कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट नॉट क्लियरली डिस्क्लोज्ड, राइट. प्राइम कॉस्ट मतलब ये जो कॉस्ट हमारी WIP में जो कॉस्ट इंक्लूड होती है उसमें कौन कौन सी चीज आएगी, परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लेबर, अदर डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट ओवरहेड्स, all the stuff has to be written. Clear. Treatment of customs or the excise duty for the valuation of inventories not appropriate. Example, accounted on clearance and hence liability not provided at the year end and not included in the inventory. फिर से treatment of custom. Sir, anyone give the highlight on this? Custom की treatment properly नहीं होती है, ऐसा आपके पास केस आया इन्वेंटरी में. एक्साइज ड्यूटी अभी तो जैसे GST आ चुका है, राइट. सो लेकिन जो केस में एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल थी और ये एप्लीकेबल है, जोन डेट भी कई केसेस में है, तो वहां पे इन्वेंटरी में आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है क्लोजिंग डेट पे, सेलेबल है, भले वो आपके गोडाउन में से बाहर निकलेगा तब आपकी एक्साइज की लायबिलिटी है, लेकिन इन्वेंटरी में वो एक्साइज की कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है. In many companies, schedule of inventory is mentioned as taken and valued and certified by management. Can we write this? Can we write this? Value of the inventory certified by management. Answer is
No, right? We cannot write or we cannot rely on the management as far as valuation of inventory is concerned. Value of loose tools is written over the period of 5 years, right? Loose tools 5 years में write off करना है. Inventories received on job work is treated as enterprise own inventory. Sometimes ऐसा होता है कि आपको जॉब वर्क के इन्वेंटरी मिली हुई तो that has to be defined separately. Inventory owned by somebody and inventory owned by you. आप क्या करते हो, अपनी खुद की इन्वेंटरी में डाल देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. That has to be a separate disclosure. Now cash flow, biggest mistakes, major mistakes people are making in the cash flow. एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, cash and cash equivalent in the balance sheet and in the cash flow are always same or it may be different? Again, let me ask you the question, let me repeat the question. Cash and cash equivalent in the balance sheet and the cash flow are always same or it can be different? Who will give the answer? Anyone? Cash and cash equivalent in cash flow and balance sheet should be equal or it can be different? Anyone from the audience? Kapil sir का आंसर है it can be different. Anyone else? Kapil sir अकेले अटेंड कर रहे हैं लगता है. Yes. Read the last line. Schedule of cash and bank balance. Last line मैं पढ़ता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा. Somebody else has also given the answer. Asha Patel ma'am is also saying different. It can be. Yes. Arun sir ने example के साथ बहुत भी बढ़िया आंसर दिया. FDR is 3 months or more taken as a cash and cash equivalent and other FDR is also absolutely right. देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है. क्या लिखा हुआ है? Schedule of cash and balance. Cash and bank balance include balances of unclaimed dividend account, margin money account and fixed deposit account which is under the lien of the bank. वो कहाँ पे आएगा आपका? Yes, unclaimed dividend account, absolutely right. ये आपका आएगा कहाँ पे? आपका आएगा, ये चीज कहाँ पे आएगी? आपकी बैलेंस शीट में आएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, लेकिन उसमें नहीं आएगी. राइट? क्लियर? राइट? Okay, clear? Any other question on this? Okay, cash and cash equivalent include deposit with the maturity over 12 months. Yes or no? लेकिन कैश फ्लो में नहीं आएगा, वो फिक्स, वो बैलेंस शीट के आइटम में आएगा. तो ये गलतियां जनरली हम करते हैं, वो पॉइंट मैंने लिखा है. परचेज ऑब्लिक सेल्स of the investment and advance given to subsidiary disclosed on a net basis in the cash flow. Friends, purchase and sales of the investment and advance given to the subsidiaries, वो जो है हमने सेट ऑफ करके रख दी है. सेट ऑफ नहीं होगा, दोनों अलग ही डिस्क्लोज होंगे. Investment in the bank fixed deposit and the mutual fund disclosed as cash flow from operating activity. Possible नहीं है, you cannot disclose it as operating investment activities. Postal franking machine balance when included as a part of cash and cash equivalent. अब वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा ही नहीं. Investment in subsidiaries are not shown separately. These are the general mistakes people are making while preparing the cash flow. Further, loans and advances provided to E are reported on net basis. वो भी नहीं होगा. Clear? Generally observed discrepancies. कौन सी? Provision of book date advances identified as a doubtful, whether adequate. देखो ध्यान दो थोड़ा सा. क्वेश्चन में आपको एक पूछता हूं. पहले तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कंटिन्यूअस एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या होती है, एंड देन वी विल डिस्कस कि उसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती है. फर्स्ट पॉइंट आपको पूछता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, कि मैंने 31 मार्च की बैलेंस शीट मैनेजमेंट ने साइन की 31 मई को. सॉरी अरुण सर का क्वेश्चन है, पहले ले लेते हैं. Whether FDR which is given as a margin money for the bank guarantee, it is to be taken as a cash and cash equivalent? Answer is yes as far as balance sheet is concerned. Answer is no as far as cash flow is concerned.
Okay, right. Let us come back to the events occurring after balance sheet date. Yes, 31st March को मेरी balance sheet end हो रही है, and I am signing the financial statement. मतलब management is signing the financial statement on 31st May. And auditor is signing. हमारा starting में question आया था ना कि भी auditor date can be the different answer. Yes. So auditor is signing the financial statement on 10th of June as an auditor. So what will be covered as event occurring after balance sheet date. Hope it is clear to all of you. कि भी 31st March मैनेजमेंट ने साइन किया 31st May को और ऑडिटर साइन कर रहा है 10th of June को. तो what which period will be covered as per accounting standard 4 for event occurring after balance sheet date? Any answer? 31st May, 10th June. आशुतोष सर बोल रहे 31st May, कपिल सर बोल रहे 10th June. Any other answer? Any support to the Ashutosh sir or the Kapil sir? Sir, we are talking about the accounting standard. Accounting standard, it is the responsibility of the management to follow accounting standards. So, yes, AS4 के हिसाब से हिरेन भाई का भी आंसर सही है. It has to be for 31st May only. Kapil sir, you are telling about 10th May. That is as for the auditing standards. So it is different. Answer is yes. Why? Because in the accounting standard there are two kind of event, adjusting event and non-adjusting event. So जो adjusting event है मतलब कि जो situation existence में थी उसके ऊपर जो impact आया हुआ है 31st March का के बाद that has to be adjusted as on 31st March balance sheet. That is considered as adjusting event. Hope it is clear to all of you, right? हाँ, 10th June का आएगा कि ऑडिटर का रिपोर्ट 10th June को है, तो ऑडिटर हैज टू थिंक कि भी बैलेंस शीट डेट से 10th June तक कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिसकी इम्पैक्ट 31st मार्च की बैलेंस शीट पे आ सकती है. उसका एडजस्टमेंट ऑडिटर नहीं करेगा, लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट जो इवेंट 31st May तक की है और उसका एडजस्टमेंट करना जरूरी था और मैनेजमेंट ने उसका एडजस्टमेंट कर दिया है तो ऑडिटर विल नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग इन हिज ऑडिट रिपोर्ट. हाउएवर 31st March तक जिसका एडजस्टमेंट करना जरूरी था लेकिन मैनेजमेंट ने एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, then auditor may raise a question in his audit report as a other matter paragraph or emphasis of matter paragraph or as a qualification. Hope it is clear to you. Now, provision of book date advances identified as doubtful, whether adequate. So you have to write the base for the provision. ऐसा नहीं है कि आपको आपका प्रॉफिट कम करने के लिए प्रोविजन कर दो. क्लियर? आपको उसका बेस लिखना पड़ेगा, कौन से बेस पे आपने ये प्रोविजन किया हुआ है. अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेट्स it is the company's policy to take into the account the impact of any significant event that occurs after the balance sheet date but before the finalization of the accounts. Clear हो चुका? Right? Yes. Accounting standard 5, net profit or loss for the period prior period and changes in accounting policy. पहला एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, प्रायर पीरियड एक्सपेंस आप कहां लिखोगे? पीएनएल में लिखोगे कि रिटेन अर्निंग में लिखोगे? मतलब कि 21-22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रीज कर रहे हैं एंड यू कम अक्रॉस विद एनी एक्सपेंस व्हिच वाज फॉर 2021 और द अर्लियर ईयर्स, मतलब कि प्रायर पीरियड का एक्सपेंस है, तो आप पीएनएल में कहां लिखोगे? आर यू गोइंग टू राइट इन द current year P&L as a prior period expense or you will write into the retained earning? Any answer? Kapil sir, Ashutosh sir, any answer from anyone? Kapil sir is saying P&L में लिखेंगे.
Any other answer? Anyone else? देखो मैंने इसलिए जानबूझ के आपको 2 ऑप्शन दिए. Sir, if we are following accounting standard, then yes, we have to write in P&L account Shruti madam. Now, but if we are following Ind AS, then retained earning of the closing of the prior year means current year opening is to be adjusted by stating the fact into the statement of changes in equity. अभी जो शेड्यूल तरीका रिवाइज फॉर्मेट आया उसमें स्पेसिफिक लाइन आइटम में दी हुई है, राइट? So if anything which is coming as a prior period item, you cannot write in P&L as far as Ind AS is concerned. As far as accounting standard is concerned, you have to write in the P&L account. Sorry, clear? Hope it is clear to all of you. Yes. Net profit and loss for the period, prior period, and changes in accounting policy. Example of the ordinary activity to be requiring disclosure, right? That is written down inventories or to NRV or reversal of the written down. Prior year का जो आपका inventories जो है उसको आप current year में write down करते हो, fixed asset को dispose करते हो, कोई litigation settle हुआ है, कोई prior year का provision है वो current year में reverse करते हो, depreciation की method change करते हो, so जो भी है उसका proper disclosure आपको करना पड़ेगा. Clear? For adjustment relating to the previous period but determined in the current period, example wage settlement arrears are not prior period item. Friends, please read first line again. Adjustment related to the previous period but determined in the current period. Example wage settlement arrears. ऐसा हुआ कि आपको arrears ऑफर किया गया या आपने arrears ऑफर किया है आपके क्लाइंट ने, राइट? ऑफर किया हुआ है तो एक्सपेंस है, लेकिन आपने 2021 का arrears 21-22 में दिया हुआ है. So in that case, what will be the situation? आपको उसको 2021 का खर्चा कंसीडर करना है? Answer is no. That has to be 21-22. But it cannot be considered as a prior period expenses. This kind of mistakes people are making. Accounting policy states, ध्यान देना थोड़ा सा, prior period expense and income are included in the respective head of the expenses and income in the profit and loss account. Paragraph 5 of AS5, nature and the amount of prior period item should be shown separately in the statement of profit and loss account in a manner that their impact on the current profit and loss can be perceived. क्या लिखा है? आप उसको other income में डाल सकते हो? Answer is no. Other expense में डाल सकते हो? Answer is no. What you have to do? You have to record it as a separate item so that people will get the idea कि उसका disclosure की impact क्या आती है. Hope it is clear to all of you. Changes in accounting policy versus changes in accounting estimate. Change in accounting policy should be made only if it is required by statute for the compliance of accounting. Changes will result is more appropriate presentation of financial statement. Changing in accounting estimate may have to be revised if the changes occurred regarding circumstances on which the estimation was made or as a result of a new information, more experience or the subsequent development. Example, आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसकी आपने यूजफुल लाइफ 5 साल 7 साल 10 लाख 15 5 साल 25 लाख आपने कंसीडर कर दिए. Now my point is different. Now can you change the useful life of the assets? Answer is yes, because it is an estimate. But can you change estimate every year? Answer is no. But again, so what will be the frequency
to have the changes in accounting. Clear? Yes, every changes has to be incorporated appropriately, but that does not mean that changes in estimate should be on every yearly basis. Clear? Change in estimate is not a prior period or extraordinary item. Clear? It is a normal accounting item. Disclose the effect of change in accounting estimate. If any kind of change in estimate is there, that effect has to be disclosed. Construction contract possible hai. Revenue has been recognized based on the bill raised and the cost has been accounted as and when incurred. Clear? Right? Lekin it requires that revenue and cost based on the stage of completion. बिल के बेस पे नहीं होता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोल रहा है आपका जैसे जैसे कंप्लीशन होता जाता है वैसे वैसे आप कॉस्ट और रेवेन्यू लिखते जाओ. लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ बिल इश्यू हो चुका है वो बिल के बेस पे लेते हैं. इट मे बी पॉसिबल कि बिल आपने इश्यू नहीं किया है लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन. Yes, 9. All companies, including SMCs, have to follow accrual method of revenue for all its revenue stream. So friends, many people are writing that we have considered interest income on a cash basis, not on revenue, not on accrual basis. ऐसा नहीं होता. Clear? That has to be on what? On accrual basis only. Revenue recognition from the services provided need careful consideration. Example, proportional completion method for builder, coaching and tuition fees, AMC और other services. यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि कितना completion हो चुका है उतनी ही इनकम आपको रिकॉर्ड करनी है. Dividend is to be accounted when right to receive payment is established. Clear? ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो पैसा मिला है तब आपको रिकॉग्नाइज करना है. अक्रू कब हो जाएगा? जब वो एजीएम में पास हो जाएगा, then you will have a right to receive the dividend. Yes. Next, recognition of revenue and transfer of sufficient or substantial risk and rewards instead of transfer of significant risk and rewards. Clear? Right? So significant और substantial ऐसा लिखते हैं, either और लिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Revenue recognition must be on the transfer of significant risk. Significant और substantial word नहीं होना चाहिए. दोनों में से एक कोई भी ऐसा लिखो, ऐसा नहीं चलेगा. You have to write it clearly. Inadequate accounting policy with respect to the timing of revenue recognition and no reference to the risk and rewards. Example, revenue recognized on the transfer of goods to the customer, revenue recognized on dispatch of the goods, revenue recognized from resale of the software, reorganized on the delivery product, sale recognized on the completion of the sale of goods. So these are the timing of the revenue and which has to be written in notes to accounts. Clear? Right? Any question? I think some questions are there in the chat box. Arun sir ka question hai, when should be revenue on CIF contract to the export to be recognized? Yes, any answer? Arun sir ka bahut badhiya question hai. When should be revenue on CIF? एक होता है FOB, free on board, and CIF contract to the export to be recognized. Anyone can give the answer? I just wanted to check how many of you are listening the webinar. So I just want to see the reaction. How many people are reacting on the Arun Sureka sir's question? CIF का contract कब book में record होगा? FOB का कब होगा? CIF का कब होगा? When risk and rewards are transferred, at that time you have to write the revenue recognition. Hope it is clear to you. CIF में risk and rewards कब ट्रांसफर होते हैं? जब उसके पास हो, उसके पॉइंट पे गुड्स पहुंचते तब ट्रांसफर होते हैं. Then it is
to be considered in the revenue. Otherwise, it should be and goods in transport. Yes, property, plant and equipment. Classification of the fixed assets often intangible are not shown separately. Sir, yes. In business of commodities, security service, should we account for unbilled revenue? Answer is yes, 110%. Why? What is the reason behind that? Because security services and commodities unbilled revenue should be recorded. अगर आप शेड्यूल 3 का फॉर्मेट देखोगे, रिसीवेबल का ब्रेकअप देखोगे, तो वो ब्रेकअप में वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन भी किया हुआ है कि हाउ मच अमाउंट इज अनबिल्ड रेवेन्यू आउट ऑफ द अबोव रिसीवेबल्स. सो फ्रेंड्स, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, फॉरगेट अबाउट दिस सर्विस, सिक्योरिटी सर्विसेज. आईटी में भी ऐसा इश्यू होता है कि आपका बिलिंग 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद करते हैं, लेकिन आपका प्रोजेक्ट 25% हो चुका है. सो दैट 25% हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द रेवेन्यू. क्लियर? राइट? Absolutely right, sir. GST department will take a stand why GST is not charged on this. I do not have any answer for this. Absolutely right. ये तो conflict of interest रहेगा ही रहेगा कि yes, but हमने जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं तब उसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर दीजिए. सेल्स एंड दूसरा सेपरेट लाइन कर दो अनबिल्ड रेवेन्यू करके, इनकम सेपरेट लाइन आइटम. अगेन आएगा वो रेवेन्यू में ही, लेकिन उसको सेपरेट लाइन आइटम बता दो टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट. डू नॉट मर्ज that item with the sales. Hope it is clear to all of you now. Thank you, sir. Thank you. Thank you, David, sir. I appreciate your participation, sir. Classification on the fixed asset, often intangible not shown separately. ऐसा होता है, intangible merge कर देते हैं. Asset held for disposal to be shown separately and valued at NRV lesser than cost. ये बहुत बड़ा इश्यू है. फिक्स एसेट जो है डिसाइड कर दिया मैनेजमेंट ने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया दैट हैज टू बी सोल्ड. फिर भी वो कहां पे रखा हुआ है? लेकिन वो सेल होगा अप्रैल में, लेकिन मार्च में कहां पे रखा है? दैट यू केप्ट द फिक्स एसेट. ऐसा नहीं होगा. दैट यू हैव टू किक आउट दैट फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिशिएटिंग वैल्यू. मतलब एनआरवी की वैल्यू से उठा दो उसको बाहर, कैरिंग वैल्यू से, नॉट एनआरवी, कैरिंग वैल्यू से बाहर उठाओ और उसको करंट असेट में, असेट हेल्ड फॉर सेल में लेके जाओ. क्लियर? रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. एंटायर क्लास ऑफ एसेट्स शुड बी रिवैल्यूड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस. रिवैल्यूएशन शुड नॉट बी मोर देन अ रिकवरेबल अमाउंट. लॉजिकल है. इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन कैन नॉट recouped from revaluation reserved to the P&L account. Hope it is clear to all of you. Clear? इसमें आपको कोई इश्यू नहीं है, right? Hope it is clear to all of you. Now next, yes, cost of fixed assets should comprise its purchase price and any attributable cost to bringing the asset for its working condition for its intended use. That we know very well. Suppose जो मशीन लगाया है तो वहां पे एक लेवलिंग किया, उसके ऊपर मशीन लगाया, तो लेवलिंग की जो कॉस्ट की हुई है, लैंडस्केपिंग की जो कॉस्ट की है, that also has to be capitalized. वो हमको पता है, लेकिन that has to be disclosed in notes to accounts. भी टोटल बिल्डिंग जो वैल्यू है, टोटल मशीनरी की जो वैल्यू रखी हुई है, उसमें से इतना यहाँ पे जाएगा, उतना वहां पे जाएगा. क्वेश्चन पूछता हूं, कब तक आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इसके साथ है. कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा और कब तक होगा? कैन एनीवन गिव मी द आंसर फॉर से? How much borrowing cost should be capitalized? Anyone? There are 50 participants. Yes.
Yes, Jagdish sir. Till the plant is put to use. Absolutely right. Plant put to use में है तब तक उसको capitalize करना पड़ेगा. Sir, आपका till the project is not completed. Absolutely right. Now my question, practical question. अभी recently मैं एक balance sheet final कर रहा था, उसकी बात चल रही है. IT कंपनी है. IT कंपनी ने एक प्रोजेक्ट बनाया. अभी बना नहीं है. There are 10 modules. 2 मॉड्यूल रेडी हो चुके हैं, बाकी के 8 मॉड्यूल बाकी है. लेकिन वो 2 मॉड्यूल रेडी हो चुके हैं और वो 2 मॉड्यूल, ध्यान देना, वो 2 मॉड्यूल जो है वो रेडी भी कर लिए और यूज भी करना चालू कर दिए. पूरा प्रोजेक्ट कौन सा है? पूरा प्रोजेक्ट कितने मॉड्यूल का है? 10 मॉड्यूल का. उसमें से ध्यान देना सर, एंड गिव मी द आंसर. बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. उसमें से 2 मॉड्यूल रेडी हो चुके हैं, तीसरे मॉड्यूल के ऊपर काम चल रहा है, बाकी तीसरे से लेके 10वें मॉड्यूल तक 2 मॉड्यूल रेडी हो चुका है. 2 मॉड्यूल यूज करना भी चालू कर दिया है कंपनी ने. तो वो बनाने की जो कॉस्ट है वो 10 मॉड्यूल की कॉस्ट जो है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी, या फिर 2 मॉड्यूल की कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी और बाकी के 8 मॉड्यूल की कॉस्ट CWIP में रहेगी. एनी आंसर? If somebody wants to give the answer and if he's raising the hand verbally, then also I can unmute him, clear, and give the answer. You can give in the chat box. Then on the piecemeal basis, 2 modules component of the borrowing cost and income start on 2 modules. Yes, 2 modules should be capitalized और 2 module का income okay. अब मेरा क्वेश्चन है, इट मे बी पॉसिबल कि हमने वर्किंग कैपिटल लोन ली है, उसमें से थोड़ा एक्सपेंस यहाँ पे हुआ. आंसर इज यस. तो वी हैव टू डिफरेंशिएट द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ दैट वर्किंग कैपिटल, और उसमें से वो जो इंटरेस्ट पोर्शन रिलेटेड टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, दैट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड. क्लियर? राइट? ओके, गुड. Even if the asset is temporarily not being used because of the factory shutdown, depreciation needs to be provided. ऐसा पॉसिबल है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक वो एसेट यूज नहीं हुए, जैसे लॉकडाउन था, तो क्या उसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे? आंसर इज नो. हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन. चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट डिफरेंट फ्रॉम द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 2 एंड नो डिस्क्लोजर वाज मेड ऑफ सच हायर रेट of the depreciation charge against the requirement of schedule 2. आपको schedule 2 में जो रेट दिया है वही रेट लेने चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा रेट, ध्यान देना थोड़ा सा, उससे ज्यादा रेट आप लेना चाहते हो, yes you can take the excess rate, but mark my words friends, उससे ज्यादा आप रेट ले सकते हो, लेकिन you have to give the disclosure into the financial statement. No depreciation or amortization charge on the leasehold land, that we know very well. Freehold और leasehold दोनों के ऊपर depreciation charge नहीं होता. Lease assets amortized over the period of lease with no reference of the useful life of the assets. हमको पता है लीज असेट जो है वो उसके लीज पीरियड में अमोर्टाइज होती है, लेकिन उसका पूरा नरेशन एज पर द लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 देना पड़ेगा कि इसमें ये डिस्क्लोजर, इसमें ये डिस्क्लोजर, इसमें ये डिस्क्लोजर. क्लियर? No depreciation provided. Yes, some is asking the question. Disclosure as well as the expert opinion. Expert opinion sir, कौन से लीज के कॉन्टेक्स्ट में you are asking? Expert opinion लीज के कॉन्टेक्स्ट में expert opinion की जरूरत नहीं है, disclosure just देना पड़ेगा. Jitendra sir, if you are asking about the expert opinion, in what cases you are talking about? You are talking about the in the fixed assets. If you charge the depreciation higher. नहीं, sorry, can you repeat? You charge the depreciation higher or lower, whatever the. Okay, so you are talking about the useful life जो आपने higher estimate की या lower estimate की है compared to the schedule 2.
उसके लिए आप बोल रहे हो एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए. Yes, you can take the expert opinion to safeguard yourself as an auditor, but yes, you can take the industry standard also, or the based on the past history also. But the relevant fact has to be disclosed in the financial statement. Clear? It is noticed that in certain case the column of depreciation was present as depreciation oblique impairment. Imply that the figures disclosed in the column are aggregation of depreciation and impairment loss. ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट को भी सेपरेटली एंड डेप्रिसिएशन को भी सेपरेटली. Yes, AS10 property, plant and equipment, historical cost, gross cost, depreciation for the period, including for the previous year, and related accumulated depreciation for the each class of assets to be disclosed separately. सिर्फ net value नहीं आनी चाहिए. Depreciation method used and the depreciation rate or useful assets of the assets if the different form of the rate specified in the statute. Clear? Example, in case of company, useful life is more or less than the schedule 2 are being considered. Clear? Foreign exchange rate. Clear? Record of foreign currency transaction. Example, export, import on the date of the transaction, that is the date of the sale or purchase, not on the date of realization of the payment. Clear? Right? तो exchange rate का difference हमको record करना पड़ेगा foreign currency transactions का. Year end balance of the money items, example debtors, creditors, advance, etc., to be translated at the year end at the closing rate. Difference between the date of transaction and the date of settlement. Transaction is to be taken to the foreign exchange difference account, not to sale purchase expenditure account. Clear? Right? Hope it is clear to you. काफी सारे लोग purchase and sales में डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. It has to be on foreign exchange difference account. Forward contracts for hedging purpose. Premium on discount at the inceptions to be amortized over the period of contract. Difference between the rate of the rate on the date of transaction and the forward rate. Exchange difference on such contract should be recognized in the settlement of P&L in the reporting period in which the exchange rate are changes. Clear? Example दिया, I am not going into the example. Yes. Gain and difference between forex rate prevailing at the time of making the investment and at the time of which the accounts of the joint venture made were recognized in the foreign exchange fluctuation reserve without clarifying whether the operations are integral or non-integral. ऐसी गलती करते हैं, right? वो इंटीग्रल किया है अकाउंटिंग, नॉन इंटीग्रल किया, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. Gain loss on derivatives. Gain loss on derivatives, hedging adjustment to carrying cost of fixed asset, which is not in accordance with the ICAI pronouncement on accounting for derivative. It has to be as per the accounting guidance not issued for by the ICAI for the accounting for the derivatives. M to M. Gain and loss on the investment. M2M gain and loss on the instrument intended to hedge long-term foreign currency borrowings utilized to acquire depreciable assets are recognized to offset the foreign exchange fluctuation differences on such long-term foreign currency borrowing. जो बोरोइंग है उसका जो गेन और लॉस होता है फॉरेन करेंसी में हमने बोरोइंग किया है वो फिक्स एसेट में नहीं जाएगा, उसको बोरोइंग्स के गेन और लॉस के फॉरेन करेंसी में डालना पड़ेगा. Accounting policy states, so these are the general points I am discussing about, right? Accounting policy states that current assets and liabilities denominated in the foreign currency at the balance sheet dates are converted at the exchange rate prevailing on the balance sheet date, except in the case of short term loan. Short term loan में करने की जरूरत नहीं है. Long term borrowing जो है उसको आपको बैलेंस शीट डेट पे रीस्टेट करना पड़ेगा.
क्लियर, एंड गेन लॉस शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली. काफी सारे लोग उसको रेवेन्यू में क्लब कर देते, दैट शुड नॉट बी द केस. Asset received free of cost from the government, valued at a cost, valued to at the cost to the government instead at nominal value. ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, गिव मी द आंसर फॉर द सेम. अभी रिसेंटली क्वेश्चन मेरे पास आया है, उसका मैं डिस्कशन कर रहा था, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक फी स्ट्रक्चर लिया हुआ है कंपनी ने इन 2020 इन द मंथ ऑफ मई 2020 में एक फिक्स एसेट लिया है और उसके सामने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी. क्लियर. अब क्या हुआ, फिक्स एसेट लिया तब उसको कैपिटलाइज कर दिया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया 2 साल में, और जो सब्सिडी है ये उसको लायबिलिटी में रखा हुआ है. बताओ उसकी ट्रीटमेंट सही है कि गलत है? What about the advance received for foreign exchange from the customer? Whether it should be converted into the yes, absolutely right. It should be converted. Arun sir, advance received है उसको भी convert करना पड़ेगा. Yes, my question is that for the accounting grants. Kapil sir, I am not following the question. You are talking about the कस्टमर क्वेश्चन. अरुण सर का जो कस्टमर का क्वेश्चन है उसके लिए आप बात कर रहे हो? कपिल सर, आई एम नॉट फॉलोइंग योर कमेंट. रॉन्ग, इट शुड बी ओके. ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट माय क्वेश्चन. यस, राइट, आई एम बैक ऑन द ट्रैक. ओके, सो एक्चुअली रॉन्ग ट्रीटमेंट इज गिवन. फिक्स एसेट मैंने जो बाय किया हुआ है उसके सामने जो गवर्नमेंट ग्रांट ली है उसको सामने सेट ऑफ करनी पड़ेगी. अब मेरा क्वेश्चन दूसरा है, अगर ये गलती हो चुकी है और करंट ईयर में 21-22 में मुझे वो गलती पता चली है, सो हाउ आई कैन रेक्टिफाई? कैन एनीवन गिव मी द आइडिया? मैंने 2021 में डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया, मतलब 30 लाख की मशीनरी थी, 30 लाख की ग्रांट थी. अब 30 लाख के ऊपर 15% के हिसाब से मैंने फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया है, और असेट में मेरी बुक वैल्यू 30 लाख में 15% निकाल दूं तो 25.5 लाख पड़ी हुई है, और लायबिलिटी में मेरी ग्रांट पड़ी हुई है 30 लाख. अब उसको बुक्स में मैं सेट ऑफ कैसे करूं? मैं असेट कैसे निकालूं? एनी आंसर? करंट ईयर में उसका एडजस्टमेंट में क्या दूं? कैन एनीवन गिव मी द आंसर? ये गलती हो चुकी है क्योंकि हमको दोनों चीज पढ़नी है कि कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, और मिस्टेक्स हो चुकी है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करे, उसको बुक्स में से कैसे निकाल दे बाहर. Adjust the assets and reverse the excess depreciation charge earlier. So Ashutosh sir is saying that कि 4.5 लाख का जो excess depreciation मैंने चार्ज किया है वो करंट ईयर में मैं रिवर्स करूंगा, लेकिन सर मेरे पास और कोई एसेट ही नहीं है, तो नेगेटिव डेप्रिसिएशन हो सकता है. होप यू गॉट माय क्वेश्चन आशुतोष सर. मेरे पास और कोई एसेट ही नहीं है, तो कैन इट बी ए नेगेटिव? आंसर इज नो. प्रायर पीरियड इनकम शो एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स? नो, मैंने सेल तो किया नहीं है सर, बुक्स में मेरे पास ही पड़ी है राजीव सर. आई हैव नॉट सोल्ड दैट एसेट फ्रेंड्स, इट इज देयर विथ मी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट yes, prior period expense already. Yes, 2 आंसर आए हुए हैं. Yes, it should be as a prior period adjustment charged to the current year depreciation as a full. Yes, क्या होगा? मेरा डेप्रिसिएशन है ही नहीं करंट ईयर में, और कोई चीज ही नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले तो वो डेप्रिसिएशन मुझे किकबैक करना पड़ेगा, मुझे करंट ईयर के पीएनएल में इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? किकबैक करके मुझे असेट में वापस करना पड़ेगा. क्लियर? राइट, करंट ईयर का. एंड बाद में वो असेट 30 लाख की हो जाती है तो उसको नॉक ऑफ करेंगे. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंड एस.
क्यों? क्योंकि इंडिया में तो प्रायर पीरियड एक्सपेंस, प्रायर पीरियड को रिटर्न अर्निंग में सेट ऑफ करना पड़ेगा, तो रिटर्न अर्निंग में से वो मेरा 4.5 लाख का डेप्रिसिएशन वापस देंगे। यहाँ पे प्रायर पीरियड इनकम रिकॉर्ड करके करंट ईयर में मैं वो डेप्रिसिएशन रिवर्स करूंगा मतलब कि वो डेप्रिसिएशन मेरे पास जो टोटल है उसमें से रिवर्स नहीं करूंगा। ध्यान दो, क्यों? क्योंकि वो रॉन्गली डेप्रिसिएशन चार्ज है, तो करंट ईयर में मैं रिवर्स करके उसको असेट बताऊंगा, करंट ईयर में इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा। क्लियर? ओके, अरुण सर का क्वेश्चन ऐसा था, माय क्वेश्चन ऑफ द एडवांस रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द ओवरसीज कस्टमर will be supplying goods to the customer and not refunding money back into the foreign exchange customer account. Sir, when you are going to record your sales, जब आपका सेल्स रिकॉर्ड एडवांस तो अभी पड़ा है, तो एडवांस मनी जो है वो आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपको उसको एक्सचेंज रेट के हिसाब से ले जाना पड़ेगा, और वो एडवांस जो है वो सेट ऑफ करोगे जब आप इनवॉइस इश्यू करोगे तब। क्लियर? सो यस, आई गॉट योर पॉइंट। मैं पैसा उसको रिफंड नहीं करने वाला हूं, लेकिन सेल्स के सामने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने वाला हूं, तो उसका जो एक्सचेंज गेन लॉस जो प्रोपोर्शनेटली जो एडवांस के सामने आया था वो कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर में ही जाएगा, एंड दैट्स व्हाई 31 मार्च को उसको रीस्टेट करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। बोलो, मेरा इन्वेस्टमेंट में एक दो क्वेश्चन है, पहले मैं वो पूछ लेता हूं, बाद में आगे जाता हूं इसका डिस्कशन करने के लिए। आई हैव बॉट वन लैंड, उसके ऊपर मैं बिल्डिंग बना के मेरी फैक्ट्री स्टार्ट करूंगा, केस नंबर 1। केस नंबर 2, आई बॉट वन लैंड, मेरा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन आई बॉट वन लैंड, उसका पीस मिल में पार्ट करके मैं उसको सेल करने वाला हूं, किया नहीं है, पार्ट किया नहीं है अभी तक। वो लैंड मेरी बुक्स में कैसे आएगी? फिक्स एसेट में आएगी केस नंबर 1 में, आंसर इज यस, क्योंकि वो लैंड लेके मैं आगे उसके ऊपर बिल्डिंग बना के उसके ऊपर फैक्ट्री लगाने वाला। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, केस नंबर 2 में वो लैंड कहां पे आएगी जिसका मैं पीसमिल करके पार्ट में करके उसको मैं सेल करने वाला हूं? वो लैंड मेरी कहां पे आएगी? कैन आई राइट इज अ फिक्स एसेट? आंसर इज यस और नो। कैन आई राइट इट एज अ इन्वेंटरी? आंसर इज यस और नो। कैन आई राइट इट एज अ इन्वेस्टमेंट? आंसर इज यस और नो। Yes, can anyone give me the answer for the same? Chat box is open. So can anyone give me the answer out of 51? I am removing myself, so it will 50. Should I repeat the question? Can anyone give me the answer? Rajiv sir is saying it should be investment. Why it should not be inventory? मेरा इंटेंशन उसको सेल करना है तो। Anyone? Current investment, okay. Friends, mark my words. अभी तक भले मेरा इंटेंशन उसको सेल करना है, लेकिन अभी तक मैंने उसको पीसमिल में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। Sir, it is not your business in deal with the land. Absolutely right. So it will go with the investment. लेकिन जब मैं उसको पीस मिल में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको सेल करूंगा तब वो मेरा इन्वेंटरी में जाएगा। एज ऑन डेट मेरा वो इन्वेंटरी नहीं बनेगा। प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे मेरा पर्पस उसका अप्रिशिएशन लेना है, एंड दैट्स व्हाई इट विल गो टू द इन्वेस्टमेंट। क्लियर? गुड, thanks for participation. Yes, next. Okay. इसमें बाकी का इन्वेस्टमेंट का तो सिंपल है, दैट यू नो वेरी वेल, उसमें मैं जाता नहीं हूं ज्यादा। यस, दैट वी नो वेरी वेल, कोटेड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट को सेपरेट डिस्क्लोजर करना है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, उसका सेपरेट वैल्यू डिस्क्लोज करना है।
काफी सारे लोग उसको डिस्क्लोज सेपरेटली नहीं करते। अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ज्यादा नहीं जाता हूँ, एम्प्लॉय बेनिफिट उसमें ज्यादा नहीं जाता हूँ। बोरोइंग कॉस्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। कैन इट बी पॉसिबल दैट इंटरेस्ट फॉर द इन्वेंटरी, कैन यू ऐड द इंटरेस्ट कॉस्ट टू द इन्वेंटरी? Anyone? Can borrowing cost रेवेन्यू पर्पस के लिए, वर्किंग कैपिटल लोन के लिए है, तो कैन आई इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट इन द इन्वेंटरी कॉस्ट? आंसर इज नो, इंटरेस्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज इट इज अ फाइनेंस एक्सपेंस डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू द इन्वेंटरी, दैट्स व्हाई। क्लियर? बट हमको पता है जब तक वो रेडी टू यूज, पुट टू यूज नहीं हो जाता है और उसका हमने अकाउंट फिक्स एसेट के लिए हमने बोरोइंग की हुई है, then it has to be capitalized till it is put to use and it become the quantifying assets. Clear? Okay. Segment reporting, accounting standard number 17. Even many people are not aware what is called segment, how the segments are bifurcated. 10% of the sale value. There are two segment, geographical segment and other one, but people are not making the separate disclosure, segment wide disclosure नहीं देते. That is also observed. क्या लिखा है? However, it was observed that no reference to the fact was made in the standalone financial statement. There should be a reference made in standalone financial statement that the company has presented the segment information in CFS. CFS में segment information दी है. अगर आपने उसको information standalone financial statement में नहीं दी है, तो standalone financial statement में ऐसा mention करना है कि भाई उसका reference वहां पे दिया हो. Clear? Next. Related party transactions. Question में आपको पूछता हूँ. Yes, any question? I think something came in the chat box. Sir, what is the correct disclosure of gratuity return back in the financial year? Shruti मैम का क्वेश्चन है, gratuity return back in the financial statement. My first question, gratuity का वैल्यूएशन किया हुआ था? आंसर इज यस. तो ग्रेजुएटी का प्रोविजन किया हुआ था? आंसर इज यस. तो रिटर्न बैक का क्वेश्चन कहां पे आएगा? उतना प्रोविजन कम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर. पॉइंट नंबर 1. क्लियर? नेक्स्ट ईयर उसका प्रोविजन कम करोगे, लेकिन आपने वैल्यूएशन नहीं किया है, मतलब कि वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी और वैल्यूएशन नहीं किया है, ग्रेजुएटी अपने हिसाब से प्रोवाइड किया हुआ है और करंट ईयर में कॉल बैक मतलब कि रिटर्न बैक हो रहा है, सो दैट हैज टू बी कंसीडर्ड एज इनकम. श्रुति मैडम, आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रेजुएटी का प्रोविजन करंट ईयर में एज पर द वैल्यूअर हमने उसका वैल्यूएशन किया हुआ है. नाउ करंट ईयर में if that valuation is coming in the picture, so that return back is considered in the current year provision itself, and इसके हिसाब से current year का provision by default कम हो जाएगा. लेकिन if it is not the case, आप खुद ग्रेजुएटी का प्रोविजन कर रहे हो अपने हिसाब से, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर जब ग्रेजुएटी का पेमेंट होता है उसका कैलकुलेशन करके आप ग्रेजुएटी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो इन द लोअर ऑर्गेनाइजेशन. सो इन केस इफ इट इज, मतलब कि आपने जो प्रोविजन किया हुआ है एवरी 5 years 10 years एस्टिमेशन के बेस पे आपका खुद का कैलकुलेशन एस्टिमेशन लिया हुआ है, वैसे इट हैज टू बी डन बाय द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर. तो वैल्यूअर में तो मैंने आंसर दे दिया कि करंट ईयर में प्रोविजन कम होगा, लेकिन अगर खुद ने किया हुआ है, करंट ईयर में रिटर्न बैक है, तो करंट ईयर का एक्सपेंस आपको कम करना पड़ेगा. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका मतलब, फॉर एग्जांपल आई हैव डन परचेज एंड सेल्स विद द रिलेटेड पार्टी, तो ए एंड बी आर रिलेटेड पार्टी, सो बी के साथ जो भी परचेज एंड सेल्स ए ने किए हैं, तो ए लिमिटेड की बुक्स में
क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31st मार्च आएगा कि ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शंस भी आएंगे? एनी आंसर? फिर से क्लोजिंग बैलेंस ही आएगा या? Okay, Kapil sir is saying both. Yes, absolutely right. So these are the mistakes people are making. People are writing only and only closing balance. It should not be there. It should be both. Clear? Right? आपका पूरा साल का ट्रांजेक्शन आपने जितना परचेस, ओके, नेट ऑफ करके लिखोगे, परचेसेस को नेट ऑफ करके लिखोगे, आंसर इज नो. बोरोइंग जो है, राइट, बोरोइंग जो है, क्लियर, राइट. सो बोरोइंग जो किया हुआ है और उसके सामने रीपेमेंट किया हुआ है, तो क्या उसको सेट ऑफ करके लिखोगे या सेपरेटली लिखोगे? आंसर इज इट हैज टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली. क्लियर? नेक्स्ट, ग्रॉस. यस, सेट ऑफ करके नहीं लिखोगे, ग्रॉस लिखोगे. यस. यस, लीज, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज. लीज का डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली नहीं देते हैं. वो लीज कौन सी है, ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस है? अकाउंटिंग पॉलिसी रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करते. फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज का जो प्रॉपर डिस्क्लोजर होता है, लीज पेमेंट अंडर द ऑपरेटिंग लीज should be recognized as an expense in the profit and loss account on straight line basis over the lease term. फ्रेंड्स, अगर 10 साल की लीज है, एवरी 3 ईयर में इंक्रीमेंट है, तो टोटल लीज रेंटल बताओ और उसको 10 साल में डिवाइड करो. So it has to be on a straight line basis as per the operating lease. But people are not writing, जितना आप लीज का पेमेंट करते हो उतना ही लिखते हो. That is not allowed. जैसे कि एग्जांपल, ABC Private Limited has entered into the leave and license agreement with XYZ Private Limited for 3 years, that is 36 months, on monthly rent of 10,000 per month, an increase of 10% monthly rent after end of every year, 1 year. Total rent payable during 36 months comes to 3,97,200. 10,000 for first year, 11,000 for second year, and 12,100 for third year. Hence, monthly rental charge to the P&L account is 11,033. कैसे किया? 3,97,200 जो टोटल मेरा रेंटल पेमेंट है, उसको 36 मंथ्स में डिवाइड किया. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फॉलोइंग दिस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में फ्यूचर लीज पेएबल का डिस्क्लोजर भी नोट्स टू अकाउंट्स में देना पड़ता है. क्लियर? अर्निंग पर शेयर, कंपनी शुड डिस्क्लोज ईपीएस ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. काफी सारे लोग ईपीएस नहीं बताते, डाइल्यूटेड भी नहीं बताते. यस, एसएमसी में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जहां पे दिखाना पड़ेगा वहां पे दिखाना ही पड़ेगा. In case of Indians, what criteria should be considered for a cancelable lease clause? Kapil sir का question है. In case of Indians, what criteria should be considered for cancelable lease clause? Yes sir. So sir, सबसे पहले तो cancelable वर्ड निकाल देते हैं. इन डेज में जो भी लीज होगी वो फाइनेंस लीज ही ट्रीट करेंगे, आइदर इट इज ऑपरेटिंग और फाइनेंस. उसको फाइनेंस लीज ही ट्रीट करेंगे और उसकी आपको, आई थिंक यू हैव द नॉलेज कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी. सो आई एम नॉट गोइंग फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट. नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कंसीडर एज अ कैंसलेशन लीज क्लॉज. इफ देयर इज अ कैंसलेबल लीज क्लॉज इज देयर, we have to read that clause properly. What are the circumstances? Clear? Right? Point number 1. Now, if it is a cancelable, but if there is no chances from the point of the leasee that he is going to cancel this lease, though the situations are mentioned, but you do take MRL from the management that this situation will not arise or have not arisen, and we are not going to have that situation, so we are not going to cancel that.
So based on that assumptions, you have to do the treatment which you are doing right now as non-cancelable lease. Clear? Whether the lease and leave and license to be considered as par for as discussed. Sir, leave and license agreement. Actually, many people are not making lease agreement, they are making leave and license agreement. From the accounting standard viewpoint, yes sir, both are considered at par for as far as lease accounting is concerned. Earning per share, even if there was no difference in the basic and diluted EPS, it should be specifically stated on the face of the P&L account itself that the EPS figure disclosed for the basic as well as diluted EPS. मैंने देखा है कई जगह पे diluted EPS नहीं होता है तो मैनेजमेंट उसको diluted EPS दिखाता ही नहीं है. Clear? Right? But ऐसा नहीं होना चाहिए. Diluted and basic दोनों फिगर सेम है तो भी आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि basic as well as diluted EPS is this. Clear? In case of a bonus issue, company is required to restate the total number of equity shares for the previous year by giving the effect to the bonus issue during the current year. Thus, EPS for the previous year would undergo a change pursuant to the bonus issue. CFS, no need to discuss that much. Capital reserve and goodwill on a separate acquisition were net off in the consolidated financial statement. ये गलती करते हैं लोग, नेट ऑफ कर देते हैं, नहीं होना चाहिए, सेपरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए. In CFS, changes in the actuarial valuation in respect of the group subsidiary adjusted to the reserve and not charged to the statement of profit and loss as per the accounting policy under ICAIs followed by the parent. क्लियर हुआ? फिर से, in consolidated financial statement, changes in actual valuation in respect of group subsidiary adjusted to reserve and not charged to the statement of profit and loss account as per the accounting policy under the ICAIs followed by the parent company. Clear? Right? So it has to be set off. Parent company. No distinction made between the goodwill on the consolidation and acquired goodwill. कई बार ऐसा होता है consolidated goodwill and acquired goodwill दोनों को goodwill के अंदर में डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. There has to be a separate line item. All disclosure which have made by subsidiary would also need to be made in the consolidated financial statement unless they are not material. कई बार ऐसा होता है कि stand alone का जो भी disclosure है वही disclosure दिखाते हैं, सब्सिडरी के जो डिस्क्लोजर है वो डिस्क्लोजर नहीं दिखाते, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये भी कभी बार नहीं दिखाते हैं कि भाई इन consolidated financial statement list of the all subsidiaries including the name, country of the incorporation or the residence, proportion of the ownership interest and the different proportion of the voting power held. Substantial increase in the amount of goodwill on the consolidation. However, no major acquisition pointed in the notes to accounts. ये ऐसा भी होता है कि भाई goodwill बहुत बढ़ जाती है consolidation में, लेकिन एक्विजिशन की नोट्स कहीं पे होती नहीं है, या ऊपर जो पॉइंट आया वो डिस्क्लोजर नहीं होता है, कौन सी कंपनी है, क्या है, उसमें कितना ओनरशिप है, वो सब. डीटीए डीटीएल क्वेश्चन पूछता हूं आपको, फिक्स एसेट में डीटीए डीटीएल का कैलकुलेशन कैसे होगा? फिक्स एसेट में डीटीए डीटीएल का कैलकुलेशन कैसे होगा? एनीवन कैन गिव द आंसर? Anyone? On the basis of WTV in in IT and books. Okay. Sir, you are absolutely right as far as India is concerned. Accounting standard में दोनों ऑप्शन है. आप डेप्रिसिएशन मतलब कि रेवेन्यू बेस पे भी ले सकते हो और बैलेंस शीट अप्रोच भी ले सकते हो. What you are talking about is a balance sheet. Clear? Right?
Shruti madam का question था, should gain on the foreign exchange be included in the other income or shown as a negative figure in the finance cost? You cannot show as a negative figure in the finance cost. You have to show as other income in the foreign other income. You cannot disclose in the finance cost. Yes, DTA detail की हमको बात कर रहे थे. It is to be disclosed in the separate paragraph, separate line item. Gratuity आता है plus आपका फिक्स एसेट आता है, राइट. सो बैलेंस शीट अप्रोच भी आप ले सकते हो, इनकम अप्रोच भी ले सकते हो एज फार एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंसर्न, बट एज फार एज इंड एस इज कंसर्न इट हैज टू बी अ बैलेंस शीट अप्रोच. Discontinuing operations, many people are not giving proper disclosure about the discontinuing operations, right. Interim financial statements, this applicable only to the interim financial statement prepared to give for the bank for the renewal purpose. क्योंकि अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है, इंडिया से एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता है. लेकिन कई जगह पे इंटरिम फाइनेंस, लेट अस थिंक फ्रॉम द इंडियाज व्यू पॉइंट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो वहां पे है, क्लियर, उसमें क्या गलती करते हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग द disclosure requirement as far as interim financial statements are concerned. Let me give you the example. Many companies during the year financial year 21-22 has not disclosed quarterly financial statement as per the revised schedule 3, though it was required. Clear? Intangible assets. क्वेश्चन आपको पूछता हूं इंटेंजिबल एसेट्स में, ध्यान देना थोड़ा सा. What is the difference between research and development cost? Can anyone give me the answer? Difference between research and development cost? Anyone from the audience who are not just online but also attending? Difference between research and development. Friends, let me give you the answer. Research एक आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हो, रिसर्च फेल हो सकता है, जब फेल होगा तो आप उसको निकाल दोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे से निकाल के सीधा एक्सपेंस आउट कर दोगे. यस, एक बार रिसर्च होने के बाद वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सर्च होने के बाद, मतलब वो प्रोडक्ट बनने के बाद वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेबल करने के लिए आप डेवलपमेंट करोगे या यूज करने के लिए उसमें डेवलपमेंट करोगे. Are you getting the point? So that is a development. So once the development activities get over, it is capitalized. Clear? Right? So director report states, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा. Director report states that the significant expense on research and development activities booked under the general accounting head. However, no separate disclosure regarding the such research and development expenditure was found in P&L account. ऐसा होता है friends. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट तीनों मैच ही नहीं होते. ऐसा नहीं होना चाहिए. एज अ फाइनेंशियल रिपोर्ट रिव्यूअर वी जस्ट जनरली व्यू दैट दो स्टफ कि कौन सी चीज डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखी है दैट आर मैचिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट. क्लियर? ओके. I have a little less time, so I am going a little bit speedily. Impairment कब करना चाहिए? 4 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, ऐसे क्वेश्चंस प्रोफेशनल्स के आते हैं. Mark my words. See on the PPT. At each balance sheet date, enterprise should assess whether there is any indication of the assets may be impaired. Clear? Provision of contingent liability and contingent asset that has to be properly evaluated. आपका क्या डिस्प्यूट चल रहा है उसके बेस पे कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट्स का आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा.
स्मॉल कंपनी को एग्जम्पशन दिया है, उसमें मैं नहीं जाता हूं. Yes, I have pulled some of the knowledge sharing given by the FRRB actually, and which was not incorporated properly. First, the accounting policies for the investment read as follows. Investments are classified into long term and the current on the basis of decision taken by the board of directors at the time of making investment. Actually policy kya hai? What should be the disclosed? The stated accounting policy is not complete considering the requirement of accounting standard 13, as the policy for determination of carrying amount of the investment has not been disclosed. क्या नहीं डिस्क्लोज किया है कि भाई carrying amount जो है उसका determination, policy for determination of carrying amount of the investment has not been disclosed. As per the accounting policy of intangible assets, technical know-how is amortized over the useful life of underlying plant. Amortization is done on straight line basis. ऐसा उन लोगों ने डिस्क्लोजर दिया हुआ था. एक्चुअल डिस्क्लोजर क्या आना चाहिए? Such policy indicates that useful life of the technical know-how has not been considered for determination of the amortization period. Are you getting the point? Useful life of the underlying plant. जो प्लांट है उसकी जो यूजफुल लाइफ है उस पे उसको टेक्निकल नो हाउ डाल दिया. ऐसा नहीं होगा. क्या होगा? Such policy indicates that the useful life of the technical know has not been considered for determining the amortization period, which is important to eliminate its amortization, to determine amortization policy as explained in paragraph blah blah of 26 accounting standard 26. Further paragraph of accounting standard 26, the amortization is done for more than 10 years, then reasons should be described. So amortization of technical know-how is a separate story. Clear? And you had to justify separately. Yes, presentation accounting standard 1. It was noted that total financial assets were given under the notes was less than the total amount of financial assets shown under the disclosure of categories of financial instrument. It was noted that difference was due to double counting of amount of unquoted equity shares in total financial assets included under the disclosure of the categories of the financial instrument. The amount of financial assets given under the note of categories of financial instruments in the balance sheet was different, which gives incorrect picture to the readers of the financial statement. अरे क्लियर हुआ? कई बार ऐसा होता है डबल कैलकुलेशन हो जाता है. फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दो. It was noted that the total financial assets were given under the notes were less than the total amount in the financial statement shown in under the disclosure category. So disclosure में कई बार डुप्लीकेशन हो जाता है. एक्सेल मिस्टेक भी बोल सकते हैं. Related party. As per the financial statement holding company, comma, as per the financial statement of the holding company had issued corporate guarantee as a security for the loan availed by the subsidiary company from the financial instrument. However, the subsidiary company had not disclosed the details and the terms of the borrowing in the financial statement. The guarantee commission should have been recognized as per India's 109 and disclosure requirement by Ind-AS 24 should have been made in the financial statement of the subsidiary company. Accordingly, it was viewed that the requirement of 24 and 109 has not been complied by the subsidiary company. Are you getting the point? ऐसे, these kind of common mistakes as far as accounting standard or Ind-AS are there, people are making. So I am trying to cover, those major mistakes which people are doing. For example, a significant amount was shown as addition to the site and land development during the year under the review, and no depreciation was charged in that respect. Site preparation cost comprising mainly uprooting of any existing structure, leveling, clearing and grading incurred to prepare the land for its intended use or for construction thereof should be suitably apportioned to land, building and plant
ध्यान में आया सर? मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया था, जो साइड प्रिपेयर की वो लैंड के लिए हो सकती है, बिल्डिंग के लिए हो सकती है, तो वो पॉसिबल है कि वो तीनों में आपको प्रॉपर्ली डिवाइड करनी पड़ेगी, एंड दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर कॉस्ट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. क्लियर? कारो में मैं नहीं जाता हूं क्योंकि कारो नया आ चुका है. इंडेक्स में नहीं जाता हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर may not be aware about the index, so I'm not going into the depth. Yes, deferred tax assets on unabsorbed depreciation and carry forward loss was recognized by the enterprise only on the basis of its projection to the future profit. As per paragraph 17 of accounting standard 22, if the enterprise has unabsorbed depreciation or carry forward losses, DTA, deferred tax asset, should be recognized only if virtually certain, supported by convincing evidence that the sufficient future taxable income will be there, will be available to realize. However, projection to future profit cannot in isolation be considered as a convincing evidence. Are you getting the point? कई बार ऐसा होता है that unabsorbed depreciation can and carry forward loss may be recognized on the basis of the future में profit होगा. Clear? लेकिन DTA DTL के लिए consider नहीं किया है, या you have to consider that based on the future profit. Sir, I think we should keep the 10 minutes are left, so it is better to have the open session for the question answer, because generally people are having the questions कि भी ऐसा हम presentation करते हैं तो सही है कि गलत है. So I think sir, if the convener is present, I request keep the mic open for all of the people, so if they have the question they can ask, because it's a long list of the mistakes as per the accounting Yes, sir. standards is there. Yes, sir. Yes, sir. Participant, you can raise the hand. Because I will be go and on because one by one line items. I will share this PPT if you want. I don't have any problem in that. But the point is that better to have the question answer sessions, because if people are having the questions relating to their practical question कि सर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत होगा कि सही होगा. So I love to share that or discuss that. But friends, I personally request each of us, we must have this, the checklist of the accounting standard, which I mentioned earlier at the beginning, must have the checklist of the index, so that we can get the idea what is appropriate and what is not appropriate, and whether the presentation done by us are appropriate or not. Anyone, any question? Yes, you can raise your hand. I will share the presentation. There will not be any issue in that. But I want that people should, if they have any question, then I should discuss that. Because I generally keep last 10 minutes for that, because I have much more stuff to discuss with this, but I cannot go on and on. Better to have the questions. Kapil sir, any questions? Jagdish sir, Aditya sir, Shruti ma'am, Rajiv sir. Sir, in case we need to give March provisional financial statements, Yes. do we need to make the as per the updated revised schedule 3 requirements, or we can Yes. use? Yes, that has to be. Because actually audit is not complete and the company requires, but the Provisional disclosure for where? Provisional for where? For the bank you are asking about? they need to submit in SRA. Sorry? SRA, slum rehabilitation of builder. Okay, slum rehabilitation. Yes, has to be as per the revised schedule 3.
And even for valuation purpose also, it required be the same. Yes, So it share has to transfer be. or something. It has to be. It has to be. Because the reason is that, yes, question आप बोल रहे हो ना provisional. Can a chartered accountant certify the provisional financial statement? सर वो स्पेशल SRS है ना 2400 SRE Yes. SRE 2400 हाँ. उसमें they are allowed to issue a certificate on the financial statements, provisional financial statement signed by the management. ओके उसमें सर आप डिटेल में पढ़ोगे तो एब्सोल्युटली यू कैन साइन बट उसमें आपको नोटिफाई करना पड़ेगा दिस इज नॉट द ऑडिटेड फाइनेंस करेक्ट पॉइंट नंबर 1 एंड यू हैव टू गिव कि जो भी अंडरलाइंग अजम्पशंस लिए हुए जितेंद्र सर आदित्य सर जो भी अंडरलाइंग अजम्पशंस लिए हुए दोस अजम्पशंस मस्ट बी रिटन इन द सर्टिफिकेशन व्हिच यू आर गिविंग and based on that we are certifying. We are not certifying the numbers, we are certifying the projections. Clear? That may be appropriate. Yes, Kapil We sir. already had a lecture from Aniket Talati sir in January, so Okay. we deliberated a lot on this. So we already Right. Any other members? Any question? I will share this PPT so you can circulate Yes. in your group. Yeah. You will share with me. I think if you don't have any, we don't have any questions. Yeah, I then- think you closed, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Kapil sir. It is a very interactive session, sir. Thank you. Yes, sir. Very interactive. And you specifically with the example of AS and all this, you made it interactive. Okay. So it's a virtual, so I just tried, because physical yes. होता तो ज़्यादा थोड़ा वो रहता है. Yes. Virtual में we have to be a little bit on that. So thanks a lot Sir. for inviting me. Utkarsh, Utkarsh sir is not there, I think. Utkarsh is not there. not there. So on behalf of Andheri Oshiwara Study Circle, I give you vote of thanks. Very good interactive session from you, sir. In future also, we will invite you for physical also, if it is possible. Yes, sir. It is very good session, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So you try to make a virtual CPE meeting very interactive. Thanks. Thank you, sir. Thank you, Aditya sir. Okay, I'm signing off. Thanks a lot for Yes. your. Thank you, mute. Thank you.